Hey guys, what's up? Amit Dubey back again with vocabulary of the day, and today's word is elucidate. I will tell you the meaning and explanation and usage in a bit, but before that, please allow me to thank you. Thank you for all the messages and the love that you guys share with me through WhatsApp, through YouTube, through Facebook, through Instagram, and मुझे बहुत खुशी होती है. I feel so encouraged and so motivated, and I feel that my work is making a difference in people's life. Even if it brings a smile on your face, even if it teaches you something, even if it encourages you, motivates you, my job is done. So thank you so much once again, and now let me get back to the vocabulary of the day, which is elucidate. So elucidate का मतलब क्या होता है? It's a $10 word that you can use, and you can shine if you like using this word. So elucidate मतलब to explain clearly. ठीक है? So how do we use it? मान लीजिए आप किसी कोई presentation दे रहा है, कोई senior है, कोई बात कर रहा है, तो आप कहेंगे sir, can you please explain this again? Instead of saying that, you could say, sir, could you please elucidate? Yeah, sounds cool, doesn't it? Could you please elucidate? है ना? या आप अगर कुछ समझा रहे हैं किसी को और किसी को आप देख रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया और ऐसे ऐसे देख रहे हैं आपको कि क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, then you can use this word elucidate. You can say that, okay, I will elucidate this further, and that means you explain this in detail. Alright, please do subscribe if you haven't already, and ज़रूर Facebook और Instagram पे भी पेजेस को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ आपकी लाइफ को बेटर करने में. देखिए, वैसे भी आप लोग जो फनी जो होते हैं चैनल्स, उनके वो तो शेयर करते हैं ना अपने दोस्तों से, अरे इसको फॉलो कर, इसको फॉलो कर, इसको सब्सक्राइब कर, बड़ा मज़ा आएगा, वो हंसाएगा, वो हंसाएगी. भाई, I don't want to make you laugh, but I want to make you succeed in life. That's the whole difference. Amit Dubey signing off. Much love.